हाँ बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन कह रहा है कि using the conservation laws demonstrate that the total mechanical energy of a planet of mass m moving around the sun along an ellipse depends only on its semi-major axis a. Find the energy as a function of a, that is the semi-major axis. So the question is saying that, let's say, a planet is moving around the sun. Let's say this is the sun with in a elliptical path. Okay, so if this distance is r1 and this distance is r2, then the semi-major axis, that is a, equals to r1 plus r2 by 2, right? So the question is basically saying that the mechanical energy, let's say E, is a function of A, or you can say that E is a function of A only, right? So ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है conservation of energy and conservation of angular momentum. सो लेट्स से कि इस पॉइंट का नाम है ए और इसका पॉइंट का नाम है बी। तो ए पॉइंट में लेट्स से कि द वेलोसिटी ऑफ द planet is v1 and the velocity of the planet at point b is v2। नाउ अगर किसी भी पॉइंट पे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालें, जैसे कि पॉइंट बी पर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी at B, that is E equals to total mechanical energy equals to kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy at point B is half mv2 square and potential energy is minus of g, that is gravitational constant, m of sun into the mass of the planet by r2, right? तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो एनर्जी का टर्म है मैकेनिकल एनर्जी, ये सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा, दैट इज द सेमी मेजर एक्सिस। नाउ वी नो दैट द प्लैनेट व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, व्हेन द प्लैनेट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट? मतलब जब ये प्लैनेट ए टू बी और बी टू ए आएगा तो इस पाथ में इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो फ्रॉम दिस कंडीशन वी कैन से दैट एम वी वन आर वन इक्वल्स टू एम वी टू आर टू, मीन्स वी वन इक्वल्स टू वी टू आर टू बाई आर वन। तो ये हमारा इक्वेशन वन हो गया। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, now we will do the conservation of energy. So from conservation of energy,
वी कैन से मतलब हम इधर इस ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगा हम उन दोनों एनर्जी को इक्वेट कर देंगे. सो ए पॉइंट पे जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज जी ऑफ mass of sun into mass of planet by R1 plus half mv1 square equals to minus of gmsm by R2, that is potential energy at B, plus half mv2 square, that is kinetic energy at point B. Now we get minus of GMS M by R1 plus half M. Now हम V1 के जगह हम V2 R2 by R1 पुट करेंगे. ओके, सो V2 R2 by R1 whole square equals to minus of GMSM by R2 plus half M V2 square, that is equals to V2 square by 2. इसको कॉमन लेकर यहाँ पर आता है R2 square by R1 square minus 1. तो हम m टर्म को we can cut the mass terms of the planet, so we get equals to gm of s 1 by r1 minus 1 by r2 equals to v2 square by 2. So r2 square minus r1 square, that is equals to r2 plus r1 into r2 minus r1 by r1 square equals to g of ms r2 minus r1 by r1 r2. So r1 and here 1 r1 get cuts off. From here we can write v2 square equals to 2g ms, and from here r2 minus r1 and r2 minus r1 also cuts. So v2 square equals to 2g ms by r1 plus r2 into r1 by r2. So this is our equation 2. So now let's find the total energy. Total energy at point B, which is E equals to half of mv2 square minus gmsm by r2, and from equation 2 we can get the value of v2 square, which is equals to half of m into 2g ms by r1 plus r2 into r1 by r2 minus of g ms m by r2 equals to, take g ms m by r2 as common into r1 by r1 plus r2 minus 1, which is equals to minus of gms m by r1 plus r2 equals to minus of gms m by 2a, because a equals to r1 plus r2 by 2, so r1 plus r2 equals to 2a. So this is our desired equation, which is the total
mechanical energy in terms of semi-major axis only. So hope you understand the question and best of luck.